नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। Cinnamon Kitchen जो देखा हमने शार्क टैंक पे, that's just tip of the iceberg. But as a founder, वो दर्द, वो दुख, वो सुनना चाहूँगा मैं. Yes. See, when I started, as you also know, from मैंने 50,000 रुपये से स्टार्ट किया था, तो वो जर्नी काफ़ी अलग होती है अपने में, जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड आप सिर्फ इंस्टाग्राम पेज था. सो ऑन इंस्टाग्राम मैं ऐसे पोस्ट करती थी दैट टुडे आई हैव मेड दिस फॉर माई सेल्फ फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, वॉट एवर, एंड दीज आर कप केक्स दैट आर अवेलेबल. राइट नाउ कभी ऑर्डर्स आए, कभी नहीं आए, कभी मैं किसी को डीएम कर रही हूँ, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया दैट लिसन आई वांट टू बाय दिस, इट वाज लाइक डीएम टू ऑर्डर काइंड ऑफ अ थिंग दैट वाज देयर बिफोर द वेबसाइट. तो कभी मैंने किया, देन वो चैट बीच में ड्रॉप ऑफ हो गई. तो कभी कभी आप पूरी जॉब छोड़ के बैठे हो, आप खाली बैठे हो और आप क्या कर रहे हो कि आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, यू हैव नो अदर चैनल, यू डोंट हैव मनी टू लाइक पुट ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप इंडिविजुअली लोगों को टेक्स्ट कर रहे हो कि लिसन आई हैव दिस, you showed interest earlier, would you like this? Or how you get to understand the consumer feedback also, that you go to farmers markets. So at the time I was making also, I was selling also, you know, I was doing the finances also, managing Instagram also. So one day before, when we had farmers markets, I used to get up and the whole day I used to just bake endlessly. Then the next morning I'm getting up at 6 o'clock to attend that farmers market, getting all the stuff myself, standing there for 4 hours in the sun, explaining everybody the product, understanding that feedback, you know. That's the initial journey that's been like of 6 months. But I think that journey taught me so much, because the first hand feedback that I received from customers during that time, simple things like portion size कितना होना चाहिए किसी चीज़ का. अगर मैंने एक कुकी बनाई है, मैंने 40 ग्राम्स की कुकी बना दी, अब मैं कंज्यूमर को देख रही हूँ दैट दे आर ओपनिंग दैट कुकी, दे आर ओनली ईटिंग हाफ ऑफ इट बिकॉज दे आर लाइक अच्छा मेरा सेशिएट हो गया इसमें, हाँ और नहीं खानी मुझे, मैं बाद में खाऊँ. आई एम बेटर ऑफ मेकिंग अ 20 ग्राम कुकी ना फॉर द कंज्यूमर. अनरैपिंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या चीज़ उनको, क्या नोट्स, क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं एंड उनका क्या फीडबैक है रियल टाइम. वो आप जितना भी किसी से टेक्स्ट पे फीडबैक मांग लो या कुछ भी है, आपको नहीं मिल सकता दैट काइंड ऑफ फीडबैक. सो दैट preliminary, the primary study that we did of the consumers through farmers markets and stuff, and through also building that Instagram community, just helped us so much to be able to formulate products that people actually want. So today when I say product market fit mil gaya hai, that has been that effort, you know. You might do that differently, like advertising, maybe do focus group studies, right? So whenever a brand is launching a new product, you'll have maybe a table of people sitting and you'll make them experience the product and you'll just ask them, what do you feel about it? This is the utility. For different people, what does the utility mean? Are there any suggestions? What's the sensory effect? It's the exact same thing that we were doing in an actual, environment. ये बताओ मुझे कि आपने जब इंस्टाग्राम पे आप आए, Right. you were working somewhere. Yes. ठीक है, तो palette was a hobby for you, Right. which you were building on. Right. Okay. And इंस्टाग्राम पे लाने की क्या वजह थी? So, Cinnamon Kitchen जब start हुआ था, it was not started as a business. It was only started as an Instagram page because I used to cook and, meal prepare for myself while doing the job. So at some point, my Instagram was just full of food. So my friends encouraged me that why don't you make a separate page for food in which you blog whatever you are making, recipes के साथ. ठीक है. So then that's why Cinnamon Kitchen was born. तो अगर आप पहले जाके अभी भी Instagram पे देखेंगे, so the bottom part of the feed is just full of badly clicked pictures and recipes. That is what it is. Then when I started doing that, people started texting me saying, hi, this looks amazing. I have also been struggling with similar issues that you are struggling with. Can you make this for me? And issues as in?
PCOS, lifestyle issues, diabetes, or I'm just generally trying to eat healthy and I'm very busy, I'm not able to do that. So can you help me with this? One query I got from a person who was like, listen, I play football and I don't find anything good in the market to snack before after. So I saw that, before your pre-workout, you make these bunch of protein bars for yourself. Will you make them for me? And I was like, I don't sell it, It is my Instagram, the recipe is right there. So you can just buy it, right? So you can just make it on your own. And he was like, no, I don't want to make it on my own, I don't have the time, I don't have these groceries, I cannot do this, and at that point I was like, I understood there was a major gap in the market where people wanted to eat healthy, they didn't have inclination, they didn't know where to start. Also for me, I guess because I kept reading about food and nutrition from a very early age after I was diagnosed with PCOS, for me that became common knowledge. But I realized it was not so much common knowledge when I spoke to other people. So they were like, I don't know if I should mix, this butter or that butter, or which cacao powder should I get, or, which agent, like baking agent does what. I don't know all of that. And I don't want to know also, So can you make this for me and send it to me? And I was like, I don't do that, right? Then I realized when this increasingly जो मुझे ऐसे queries आने लगी, that there is a very big gap in the market that needs to be bridged. And also because I was preparing food for myself while doing the job, तो मेरा उसकी तरफ interest भी बढ़ता चला गया, because I kept doing it on a regular basis also. I kept getting interesting in it also. I kept experimenting also. I used to feel good doing that. And also while eating, I used to feel good that I'm feeding my body with something really nutritious. So then I decided that to leave my job and to take the plunge of starting Cinnamon Kitchen as a brand. So when was this call कि you see कि मेरा एक revenue आ रहा है एक parallel source से, which is more than my regular income? Was that a comparison? No, that was not the case. So कैसे decide किया आपने कि मुझे छोड़ना है अब? Because I wanted to do it. It was just I am just a bit of a impulsive person, you can say. And if I believe, I'm indecisive when I'm indecisive, but when I make up my mind on something, I'm like, try करके देखने में कुछ नहीं जाता. Because at the time, my argument was कि मैं अभी job कर रही हूँ. This is the salary that I'm drawing. Okay? अगर मैं ये try करना चाहती हूँ, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे scope भी है और यहाँ पे possibility भी है, तो अगर मैं 1 साल से try कर भी लेती हूँ और अगर ये नहीं भी चलता है, तो मैं जॉब तो दोबारा कर ही सकती हूँ. You had your like degrees in place. Yeah, I had my degrees in place. I had my work experience in place. Maximum क्या होगा कि 1 साल का gap दिखेगा, nothing else, है ना? So my worst case scenario is for me to get back to the job. Technically, then I'm living my worst case scenario. ठीक है. Right. If I'm already living my worst case scenario, then what do I have to fear? इससे worst क्या होगा? इससे worst क्या होगा? बिल्कुल. So I was like, तभी मैंने मुंबई में नहीं start किया. बिकॉज मुंबई से मैं नहीं थी, मैं दिल्ली से थी. सो आई रियलाइज दैट मेरे ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स वगैरह वहाँ पे रहते हुए, इट्स ऑल्सो एन एक्सपेंसिव सिटी, तो ज़्यादा होंगे. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली एंड परस्यू इट. ड्यूरिंग दिस टाइम आई वॉज नॉट रियली, व्हेन आई वॉज इन बॉम्बे ऑल्सो with a full-time job, my job was quite demanding. I was not able to do Cinnamon Kitchen in terms of selling. I would do some on the weekends and set like 1 or 2 farmers markets, but I was never at that point where I'm really earning a lot from this, so I can like offset. So it's not like आपको entrepreneur बनना नहीं था पहले, but it happened naturally. Yes. Because you were posting some stuff that you were making for yourself and people, you saw that there is a demand for it. Yeah. So the first step was, also when I realized there was a demand for it, the idea was not अच्छा demand है तो मैं business create कर लेती हूँ. ऐसा नहीं था. मतलब बिजनेस का जो थॉट है, वो स्केलिंग का जो थॉट है, वो आई वुड से मुझे 2 साल पहले ही आया है. दैट इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर थॉट. पहले साल, बिकॉज आई हैड सफर्ड सो इमेंसली विद things that I had faced during the process, the idea was just to be able to help people out and to be able to create something that was of value. So that was the aim. I was like, okay, along with that, of course, I'm going to be able to get enough money to be able to sustain myself with the profits and everything. But it was not like, oh, I have a startup idea. That was not the thought. The thought was,
I have something that can be of value to people that I love creating, and I want to take that plunge to pursue it and see where it goes. तब मुझे उतना entrepreneurship के बारे में पता, I was like 24 when I started, and मुझे तब उतना entrepreneurship के बारे में पता भी नहीं था. But then of course as I went on to it, as the scale increased, जैसे Instagram page से start किया, फिर धीरे धीरे मैंने कहा कि बहुत DMs आ रहे हैं, तो एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक सिंपल ऑर्डरिंग पेज जैसा हमने लिया, तो उस पर मेन्यू डाला एंड पीपल स्टार्टेड ऑर्डरिंग फ्रॉम देयर. देन उसका भी स्केल बढ़ा. सो विद इन अ ईयर ऑफ बीइंग एट होम, the orders increased to such a sizable amount that I had to move out. So that happened organically for me, because when customers, as a brand, our idea has always been to not skimp on the quality of products that we are using. And I think that is the major reason for the customer stickiness. So when the orders kept increasing, I had to move out. And then that was the time of COVID. So then I moved to a 1,000 square feet facility that I was just, again, I had some help over there. And then just retailing out of, also still handling a bit of cooking and also handling the branding bit. Then within 6 months, I fell short over there also. Then I moved to a bigger facility that was around a 2,500 square feet facility. At this stage is when the business started really, then this stage I got that thing of, okay, it's becoming a business. And it's not like a homegrown brand anymore, because it's doing a sizable chunk of orders a day and it's increasing at a sizable pace every time. So I started seeing it differently, where I was like, our essence is still the products that we are creating, but now because of the scale, there is also a need to have other departments in place so that I can provide quality overall, because I was overstretching myself through trying to do customer care, also product, also this and that. So there was that need of now making departments and running it as making teams and departments and running it as a business. So when we moved to that 2,500 square feet facility was when we were really able to make these teams and increase our production capacity and stuff, which also allowed us to then go to a bunch of retail stores where the products were really accepted, and also sell more online, on Zomato, all of these platforms. Now currently the way we are working is that we are growing very fast. We've grown 8x from last year to this year. And a chunk of it has just happened organically. Now we have also started doing some ads. Now we've moved to a 5,000 square feet facility, like expanded within the same facility. We're about 42 people internally, and we've managed to create different teams. And in the past year, 6 months here, the idea has been to make individual teams and to really streamline the business, infuse more tech into the business, because the volumes are such that you can only do that when you have everything streamlined as a business. And now where we're going with it is to now we are looking at raising funds and just really expanding it, because at this point the problem for us is the supply and not so much the demand. There's a clear demand for the product. When we started 3 years ago, that whole vegan gluten-free market was also very new. So people would come to me and be like, "Ye aap kya bech rahe ho?" Like, "Ye aap kyun itna mehenga bech rahe ho? Isme kya hai aisa?" And then there was a lot of education that had to follow that. But now people come up to us and they're like, "Listen, I have these intolerances and this is what I want to eat. This is what suits my body and my, hormone health. So what do you have for me?" Right? So there's been that kind of shift. And I think that's also happened a lot during and after COVID, where people have realized that they need to eat healthy. And you can see that trend actually very widely, where you see all these mass brands also coming up with healthier alternatives or vegan alternatives of everyday products. So if a big brand is doing something like this and launching series of healthier products, you know that there is a shift in what the customer wants now. So now for us at this point, I feel, because we've been first movers in the space, there was hardly anybody. Still, there is really nobody who's doing what we're doing. So the idea is to now be able to really expand and to have a supply, set up a factory, do rebranding, work on distribution, work on the shelf life of products, and really go mass market with it.
because there is a very clear need, while of course staying true to the roots of the brand and the products and ingredients, because that to me has more of a meaning than just a brand strategy. It is how it started and it is who I am, so that's always going to be. बट टिगल की शुरुआत फिर जब मैं गुड़गांव में ही थी और ये सब चीज़ें चल रही थी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये चॉकलेट ड्रिंक्स की स्पेस में ना कुछ तूफ़ानी मचाई जा सकती है. ये कैसे हो रियलाइज? मल्टीपल ट्रिगर. एक तो 24/7 आउटलेट में मैं घुस गई एक दिन, और जब आप आइडिया सर्च कर रहे होते हो ना, या जब आपको लगता है मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, तो आप हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो. मतलब हर इंडस्ट्री में घुसना चाहोगे आप, हर इंडस्ट्री, आपके पास इतने क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन होंगे. मैं आइसक्रीम सेलर्स, ये जो कार्ट्स होते हैं, बढ़िया आधे आधे घंटे बैठ के क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम सेलर्स से मैं गप्पे मारती थी कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से आते हो. तो फिर मुझे पता चला ये जैसे आइसक्रीम कार्ट्स जो होते हैं वो लोग ये ऐसी ब्रांड्स कंपनीज ना छोटे छोटे गाँव में जाते हैं और वहाँ के लोगों को लेके आती है. गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई लेकर आएगी. बहुत सारे 25, 30, 40 लोग साथ में लाएगी. फिर उनको सिखाती है कैसे ऐसे करना है. फिर मैं उनसे पूछती थी, अच्छा तो आप दिन में कितना बेच लेते हो? तो पता चलता था इतने गर्मियों में तो हम 8-10 हज़ार की सेल्स कर रहे हैं दिन की, कोई 25 हज़ार का भी एक कार्ट सेल्स कर रहा है. फिर आप कैलकुलेट करते हो, अच्छा एक कार्ट कर रहा है, इस एरिया में कितने कार्ट होंगे, इतना सेल कर रहा है क्वालिटी पॉट्स. तो वो सब चल रहा था. तो मैं बहुत क्यूरियस थी अबाउट ऑल द इंडस्ट्री. तो मैं एक दिन 24/7 के आउटलेट में थी, वही कीड़ा लेके अपना, और मैंने देखा यार यहाँ, ये मेरा पहला ट्रिगर था. मैंने देखा कि टी, आप जब कोल्ड और हॉट देखते हो ना, तो कोल्ड में ना आपको हेल्थ ड्रिंक, सोडास, कोल्ड ड्रिंक, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको कोल्ड में दिख जाएंगी. और आप जब हॉट में देख रहे थे ना, तो वही 100 साल पुरानी टी की कुछ ब्रांड्स और कुछ आजकल की न्यू एज कॉफ़ी ब्रांड्स, और बस. तो मुझे लगा कि यार इतना हॉट में कुछ है नहीं क्या. और मैं जेन्युइनली बचपन से मेरे को ऐसा टी और कॉफ़ी का इतना नहीं रहा, तो मैं चॉकलेट ड्रिंक्स पीती आई हूँ. बट इंडिया में चॉकलेट ड्रिंक्स का मार्केट अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ जितना ग्लोबली हो चुका है. तो आपके दिमाग में चॉकलेट ड्रिंक से पता है क्या आता होगा? बॉर्नविटा, कैडबरी, बट वो तो है ही नहीं चॉकलेट ड्रिंक्स, राइट? या वो हॉट चॉकलेट नहीं है. तो वो मेरा एक पहला ट्रिगर था. कपल ऑफ अदर चीज़ें जो मुझे लगती थी कि क्योंकि मैं खुद इतना वो थी, तो मुझे लगता था बाहर जाके मैं 200-250 रुपये दे के एक हॉट चॉकलेट पी रही हूँ. घर पे बनाऊँ अगर मैं मिक्सेस ला के जो मिलते थे, बहुत ही ख़राब प्री मिक्सेस, कोई क्वालिटी नहीं है, बस पीने के लिए फॉर द सेक ऑफ क्रेविंग आप पी रहे हो. तो मेरे को लगा यार कुछ कर नहीं रहे हैं, और एक एवोल्यूशन आता है, टी का आया, उसमें इतना इनोवेशन हुआ. फिर वो कॉफ़ी आया. ऑब्वियसली कॉफ़ी टी को मैच नहीं करेगा इंडिया में, या करेगा तो डेकेड्स लगेंगे, बट बहुत बड़ा बन गया वो. सोचा था आपने 2-3 डेकेड पहले कि कॉफ़ी इंडिया में इतना बड़ा इस स्टेज पे भी आ जाएगा, नहीं. तो मुझे लगा यार कुछ और कर सकते हैं क्या. फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा यार चॉकलेट ड्रिंक्स ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में जा रहा है. जैसे क्राफ्ट बेवरेज कंपनीज ने जो कॉफ़ी के साथ किया ना, वो क्राफ्ट बेवरेज कंपनीज ने चॉकलेट्स के साथ भी किया. फॉर एग्जांपल 50% डार्क हॉट चॉकलेट, 30% आइस चॉकलेट, परसेंटेजेस में किया, ओरिजिन पे किया. तो मुझे लगा ये तो कोई नहीं कर रहा है यार. वो कैडबरी की हॉट चॉकलेट मिलती है आपको, उसमें क्या कोको है. अब मैंने 50 से भी ज़्यादा फार्म से कोको टेस्ट किया था टिगल का पहला प्रोडक्ट बनाने से पहले, और ये लॉकडाउन की बात है. तो पहला लॉकडाउन जब हटा तो मेरे घर पे दरवाजे पे रोज़ कोई आता था डिलीवरी वाले भैया, एक साउथ इंडिया से कोको का सैंपल लेके. इतना जब मैंने वो 50 से भी ज़्यादा कोको टेस्ट कर लिया ना, तो मुझे लगा यार ये कैडबरी तो क्या ही कर रहे हैं, इनको पता भी है ये क्या ही कर रहे हैं. क्योंकि वो 50 में से मैंने वर्स्ट भी ट्राई करे थे ना, वो भी मैं उनको चलो कंपेयर कर सकती हूँ टू कैडबरी. तो मुझे लगा कि यार वो स्पेशलाइजेशन है ही नहीं. और चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको, जैसे हमारी टैगलाइन है, बिकॉज एडल्टिंग डिजर्व्स अ टाइम आउट टू, राइट? अब आप लोग विद योर 10-year-old, 10-month-old, right? 10-month-old, you also sometimes feel like कि यार एक ब्रेक दे दो, right? Because adulting really deserves a time out too. There's so much pressure. The whole adulting journey, I think nobody taught us ever कि adulting में होगा क्या क्या. हमें तो ऐसे फेंक दिया जाता है. तो हमने कहा यार ये चॉकलेट ड्रिंक्स और ये जो पर्सनल एक पर्सनालिटी भी है, आई थिंक कुछ कर सकते हैं. तो वो वैसे हमने टिगल की शुरुआत करी. और टिगल को एक्चुअली मैं गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन से बेचना चालू किया था. मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने बोला था कि यार अपना आइडिया हमेशा $1 billion आइडिया लगता है ना.
तो जितनी कम रिसोर्सेज हो ना उससे टेस्ट कर लो पहले। तो सिल्वर जार में हॉट चॉकलेट भरी, 50 कुछ कप बनाए और मेट्रो स्टेशन के बाहर आई स्टार्टेड सेलिंग हॉट Was it चॉकलेट। like selling like cups में? I was selling in the pouring cups. it and हाँ, then I was giving it? pouring जैसे चाय, it. कॉफी मैंने ऐसे पैम्पलेट्स करते हैं। प्रिंट करे, इतना बड़ा जार लिया है, कुछ 1,500-2,000 का, बड़ा दुख हुआ था मुझे वो लेने में उस टाइम पे। और एक सेकेंड हैंड टेबल खरीदा कुछ 500-600 रुपये का, और एक भैया को बुलाया जो मैं जहाँ पीजी में रहती थी ना, तो उसी के सामने वो सेल करते थे, उनका हेल्प के लिए कोई था। तो मैंने कहा आज आप मेरे साथ चलोगे? तो वो चल दिए मेरे साथ। फिर मैंने कहा चलो इसको सेट करो। पहले तो कोई अलाउ नहीं कर रहा था, मैं सबको लगा ये क्या, ये लड़की इतना बड़ा बैग में क्या लेके आ गई है, तो हमारा कॉम्पिटिटर आ गया है और क्या कर रही है, राइट। फिर एक बिरयानी वाले शॉप वाले भैया ने बोला आ जाओ इधर सेटअप कर। No competition. No, he was very helpful. अच्छा hot chocolate plus Some people biryani. who are Plus helpful. बिरयानी, हाँ, उन्होंने कहा ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। Let's collaborate, bro. Let's collaborate. That's an offline collaboration. Yeah, but he was very helpful. I always say I'm so grateful to that biryani भैया, because if he did not allow me, उनसे पहले मुझे 5 लोगों ने उस एरिया में मना कर दिया था, तो मैं शायद सच में डिसअपॉइंट होके उस दिन घर चली जाती। वेरी थैंकफुल टू दैट बिरयानी भैया हु अलाउड मी। एंड जब मैंने वो पहले 50 कप कुछ 50 मिनट में बेचे थे ना, और मैं 30 रुपये ले रही थी उस दिन, तो पर कप, बिकॉज आप फ्री में बेचोगे तो लोगों को लगेगा और था कितना यार इतना छोटा सा ही कप था। हाँ, टेस्टिंग के उससे था, उसमें लिखा भी था मेरे पैम्पलेट में। तो जब वो जितने रुपए भी मेरे पास आए उस दिन, तो जो खुद जॉब वॉब पे मिलता है ना, उसका तो कोई दैट मनी फेल्ट लाइक मनी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।